Everyone. Video lesson 19th, Visitor Management. The content for the course would be Sustainable and Responsible Rural Tourism, Community Involvement in Rural Tourism, Partnership in Rural Tourism, Visitor Management, Benefit and Challenges of Rural Tourism. This course would conclude total 20 video lessons. In this session 19, the content for the course would be Introduction to Visitor Management in Rural Tourism Benefit in India, Information Education Interpretation, Marketing Promotions, Merchandising Food and Beverages, Activities and Experience, and the last one is Community Benefit for the Rural Tourism, which would include surveillance, safety, infrastructure, accommodation plus facilities, instant landscape, and transportation elements. Now, visitor management in rural tourism would contain introduction to visitor management in rural tourism development, rural tourism benefit in India, community benefit for rural tourism. Now, let's start with the topic as rural tourism benefit. As you can see, before we start, now let us discuss about rural tourism benefit. It means it allows the creation of a replacement sources of income in the non-agriculture sector for rural developers. The added income from rural tourism can be contribute to the revival of lost folk and handicraft as well. If we are talking about rural tourism benefit, they have a lot of benefit as it is primarily allows tourists to escape and explore India's rich heritage, and it allows people living in the rural India to make a living through tourism. Rural tourism promote the social and economic development of a rural resident. There are a lot of benefit for the rural tourism. You can say that there are some ways which are responsible for rural tourism for the local communities, such as a better community for the resident, lots of job, more creative and entrepreneurial opportunities for all the residents who are living in that local community, more peaceful and tolerable provincial heritage, preserving the lifestyle and wildlife we love in this local community, fueling the adaptation of sustainable technology and technique as well. If we are talking about why this rural tourism is important and what will be the beneficial for rural tourism in local communities. According to UNTWO, which understands that rural tourism is a type of tourism activity in which the visitor experience is related to a wide range of products generally linked to nature-based activity, agriculture, rural lifestyle, culture, angling, and sightseeing as well. If we are talking about rural tourism as a phenomenon, rural tourism is related to natural environment, hill, mountain, agriculture terraces, river, rural society, countryside household presenting conservation, lifestyle free of culture pollution, experience, adventure, and above all the benefit to the local people. There are a lot of rural tourism advantages and beneficial, such as rural tourism offer great opportunity for emerging economies and developing countries as well. It create job, strengthen the local economy, contribute to local infrastructure development, and can also help to conserve the natural environment and cultural assets as well as traditional, and also to reduce poverty and inequality. If we are talking about these, there are some impact for the rural tourism as well. It also generate employment and income. Another positive impact of rural tourism is to improvement in the infrastructure.
This would include road and all the rail improvement, airport improvement, improvement in utilities such as water supply and telecommunication as well. Protecting the environment, natural resources and wildlife, providing socio-economic benefit for the communities who live in the tourist destination, conserving cultural heritage and creating authenticated tourist experiencing, bringing tourists and local communities together for a mutual benefit as well. If we are talking about these beneficial, it will also include social benefit for the tourism, which would include through the revenues and the job. It also provide travel and tourism. It help in reduce poverty and improve health, housing, education and overall well-being as well. It support diversity and inclusion, empowering and offering opportunities to the people from all the walks of life, including minorities, youth and women as well. As you all can see, tourist or tourism is considered to be an economic brozana. It is a multi-segment industry. While arguing with the positive economic effect of tourism, we also study about contribution to generation of national income, expansion of employment opportunity, risking the tax revenue, generating of foreign exchanges as well. Now, let's see our PPT. As you all can see, product and services which are completely linked with our tourism destination benefits and community benefit as well. In which the first one is information. If we are talking about product and services, the first will be information. With the help of this information, the service we are providing through rural tourism is linking to protected area of the region, which will help in our community benefit as well. Second one is education. With the help of this education service, we can say that we are development of the concept, storyline, themes, and trails for the community benefit as well. The third one is interpretation. Interpretation, which means development of the concept or which will help in the route information system, signposting, providing information about local communities and their cultural as well as their tourism supply. It would also include environmental education and training for community, schools, etc. as well. They also include conservation of local culture that we call as myths, or you can say that storyline as well. If we are talking about benefit, the fourth one is marketing promotion. It would include which help our community benefit as in marketing and promotion of the destination. It also protect area which is a core of identify and image of the destination. It can also include concept and product development as well. It may be consist of promotion of local product and services, or you can say that services which will help the community for their beneficial as well as tourism destination beneficial purposes as well. The fifth one is merchandising product and beverages. It would include outlet for the regional produce, conservation of traditional handicraft, promotion of organic agriculture, local enterprises for the catering, and the last and the sixth one is activities and experiences. If we are talking about activities and experiences, it would include create activities, experience with the local provider as well as community for their community beneficial as well. Local people which are working as a guide, as a cultural broker and animator as well. Event based on local culture, it will also include in our activities and experiences which are providing as a services, or you can say that products which would include in our rural tourism benefit. So these are the some benefit which would help in our community as well as our rural tourism destination beneficial. So these are some aspects under which you can say that it will help in generating income and employment.
As you're talking about rural tourism, it is in India has merged as an instrument of income and employment generation, poverty alleviation, and sustainable human development. It contributes 6.23% to the national GDP and 8.78% of total employment in India. There are total three important aspects or impact that would help in rural tourism benefit, which is economic through interpreted routes, which is direct, indirect, and induced effect. These are impact and the infrastructure. The structure of rural tourism sector determines the sector economic impact of a country. The economic effect of the community include improved tax revenue and personal income, increase the standard of living, and more employment opportunities. With the help of the social and rural tourism benefit, you can say that socio-cultural impact are associated with the interaction between people with differing cultural backgrounds, attitude and behavior and relationship to the material goods. Now, let's have a look with the community benefit for the rural tourism, as there are some community benefit which we are arriving and which we are revising from our rural tourism. So now let's have a look with this community benefits. First is surveillance safety, which would include local employment, increase overall level of safety and Medicare as well, reduce illegal activities, cooperation with the local police, inform tourists about hazard and health risk as well. The second one is infrastructure, accommodation and facilities as well, which would include improvement and maintenance of road and trails, PA facilities as a local facilities like education, community center, accommodation for the school camp, etc. Hire local enterprises for construction and maintenance. Next one is intent landscape. This would include contribution to tourism potential of the area, contribution to conservation natural heritage of communities, conservation of traditional land uses. The fourth and the last one is transportation. It would consist improvement of local public transport and sustainable transportation policy as well. As these are the industrial or rural tourism benefit, it is important as it brings and due to its role as a commercial activity that create demand and growth for many more industries. Tourism not only to contribute toward more economic activities, but it is also to generate more employment, revenue, and play a significant role in the development of rural tourism as well as for the local communities for their self beneficial as well as for their community beneficial. That's why rural tourism is benefit. Now, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रूरल टूरिज्म। रूरल टूरिज्म इज व्हेन पीपल विजिट द रूरल एरियाज एंड दे स्टडी देयर आर्ट, देयर कल्चर, देयर वे ऑफ लाइफस्टाइल। सो दिस इज कॉल्ड एज रूरल टूरिज्म। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इन रूरल टूरिज्म वो है विजिटर्स मैनेजमेंट। क्या है ये विजिटर्स मैनेजमेंट? एक्चुअली होता क्या है, जब लोग रूरल एरियाज में जाते हैं फॉर एक्सपीरियंसिंग कल्चर, आर्ट, लाइफस्टाइल, तो जो रूरल लोग हैं वो उनको उस तरह से फैसिलिटेट नहीं कर पाते, जिससे लोग ज़्यादा रूरल टूरिज्म में अट्रैक्ट नहीं हो पाते। सो आज तुम्हें एक प्रोजेक्ट दे रही हूँ। क्या करना है आप लोगों को, कोई एक विलेज टूरिस्ट को गाइड बन के तुम्हें उसको पूरा विजिट करवाना है अपना विलेज। हेलो एवरीवन, तो आज हम जा रहे हैं टू द ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ और हमारे साथ हैं एना फ्रॉम इंग्लैंड।
हाय गाइस, आज मेरे इंडियन फ्रेंड्स मुझे घुमाने लेके जा रहे हैं। मेरे साथ है श्रेया, आयरन और वी जो गाइड चला रहा है। अरे वो गाड़ी चला रहा है। Whatever. तो थोड़ी ही देर में हम पहुंच रहे हैं अपने डेस्टिनेशन पे। श्रेया, तुम ना कैमरा बंद कर दे। क्यों, क्या हुआ? तेरी ऑडियंस के ना देखने लायक व्यूज नहीं आगे। एग्जैक्टली, यहाँ तो कोई बिल्डिंग्स नहीं है। ये Exactly. क्या है? काऊ डंक? On hands? Oh my god. अरे हम विलेज से जा रहे हैं, यहाँ पर काऊ डंक को सुखाकर एज अ फ्यूल यूज किया जाता है, फिर वो खाना बनाने में काम आता है। Still, it's gross. यार ये विलेज है, यहाँ पे ना लोग बहुत पुअर होते हैं। इट्स अ बैकवर्ड विलेज। ये लोग जिस विलेज को बैकवर्ड बोल रहे हैं, मेरा बचपन ऐसे ही एक विलेज में गुजरा। इनको गांव की असली सैर तो करवानी पड़ेगी। क्या हुआ? Guys, पता नहीं, मैं जाकर देखता हूँ। देख क्या? इसको क्या हो गया? oh god. इस गाय को भी यहीं खराब होना था। जी नमस्ते। नमस्ते। जी क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? आप कौन? जी मैं इस गांव के सरपंच की बेटी हूँ, सिमरन। हमारी गाड़ी खराब हो गई है, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा? जी यहाँ आसपास तो कोई मैकेनिक नहीं है, I told you guys, backward village. पर मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पास ही मेरा घर है। अब तो शाम हो गई है, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा। आज की रात आप हमारे घर में रुक जाइए, सुबह होते ही मैकेनिक को बुलवा के आपकी गाड़ी ठीक करवा देंगे। यार तुम लोगों ने कहा था चंडीगढ़ घुमाओगे, अब इस गांव में? जी हमारे गांव में भी देखने को बहुत कुछ है। Really? Like what? Cow dung? Guys, see, हमारे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं है, और एक ही रात की तो बात है। No वीर। गांव में। अरे चलते हैं ना। What's it? What else? ये ना चाहते हुए यहाँ आए हैं, पर यहाँ से जाना ना चाहेंगे। ऐसा गांव का अनुभव कराएंगे इन्हें कि इस दिन को कभी भूल ना पाएंगे। पापा, ये लोग दिल्ली से आए हैं। यहाँ पास ही की गाड़ी खराब हो गई थी तो मैं इन्हें यहाँ ले आई। बहुत बढ़िया किया बेटा, बहुत बढ़िया किया। चलो तुम इसको खाना खिलाओ, मैं गाड़ी मैकेनिक का इंतजाम करता हूँ। ये हमारे गांव की ट्रेडिशनल ड्रिंक है, मीठी लस्सी। खाना कैसा लगा आप सबको? बहुत टेस्टी था। सच में बहुत अच्छा था सिमरन। बहुत अच्छा था। बहुत मजा आ गया। थैंक यू। अंकल वो कल मैकेनिक का अरेंजमेंट करवा देना। जो भी हमारे गांव में आता है, हम उसको अपने घर में ठहराते हैं, घर का शुद्ध खाना खिलाते हैं, खूब सेवा करते हैं। हाँ, जो भी शहर में भाग दौड़ में उसकी आए गए की आयु भक्त नहीं होती, सेवा नहीं होती। हमारे गांव में क्या है, हम आए हर इंसान की बहुत सेवा करते हैं, आयु भक्त अच्छी करते हैं, बहुत मान सत्कार मिलता है। कोई आना नहीं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
शहर की भागदौड़ से दूर कुदरत की गोद में बसा है हमारा गांव। ब्यूटीफुल। मैकेनिक को बुला लिया है, आप तैयार हो जाइए, तब तक आपको गांव की कुछ खास चीजें दिखा के लाती हूँ। ओके। मौका मिला है आज मुझे इनका ये सफ़र यादगार बनाने का, इस प्रोजेक्ट के ज़रिए अपने गांव का गौरव बढ़ाने का। ये बेटा गाय और भैंसों का चारा है, जो भैंस गाय खाती है। उसके आगे गेहूं है, गेहूं जो इंसान खाता है, जानवर भी ले लेता है। उसके आगे मूली है, सलगम है, साग है, जो इंसान खाता है। देखिए ये है गोबर गैस प्लांट। इसमें सारे गोबर को डाल दिया जाता है, जिसे आप कावडंग कह रहे थे। फिर इसे घुमाया जाता है, इसके अंदर गैस बनती है और वो यहाँ इस पाइप से घरों में जाती है और इस गैस को काम लाया जाता है खाना बनाने में। अब पता चला मैं किसकी बात कर रहा था। हाँ जी बाबा। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है। बाबा का फोन आया था, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है। बाबा का फोन आया था, गाड़ी ठीक हो गई है। अरे गाड़ी ठीक हो गई है। अरे सिमरन क्या कर रही हो? तुम्हें पता है आज ये तुम्हारी वजह से हो पाया, जो हमने इतना एंजॉय किया। सच में
ये मेरी लाइफ का ना बेस्ट डे था। इतनी शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में ना मैंने दिल खोल के मजे किए। यहाँ पर देखो, यहाँ मैंने बहुत एंजॉय किया। बेटा मैकेनिक ने तो बोला था गाड़ी बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकल गाड़ी को कुछ नहीं हुआ था, गाड़ी बिल्कुल ठीक थी, पर मेरे दोस्तों की सोच गांव को लेकर बिल्कुल ठीक नहीं थी। सच बताऊं तो अंकल मैं भी ऐसे ही एक गांव में पैदा हुआ। जब पढ़ाई के लिए शहर गया तो उधर के दौड़ भाग भरी जिंदगी में ही ढल गया, और सच बताऊं तो फिर मुझे गांव का कहलाने में एक शर्मिंदगी सी महसूस होने लगी। मेरे किसी भी दोस्त को ये पता ही नहीं कि मैं भी एक गाँव का ही लड़का हूँ। पर कल जब हम जा रहे थे मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों की सोच गांव के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तब मैंने ठान लिया कि गांव की असली सैर तो इनको करवानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने गाड़ी खराब होने का नाटक किया। वीर, मुझे पहली बार ना किसी का झूठ बोलने का इतना बुरा नहीं लगा। तुमने सच में बहुत अच्छा किया। हाँ भी, और तुम ऐसे जगह से होने से शर्मिंदा कैसे हो सकते हो? यहाँ के लोग कितने प्यारे हैं। वीर, मुझे माफ कर दो, इतनी सुंदर जगह के बारे में मैंने पता नहीं क्या क्या कह दिया। अच्छा चलो बस गाइस, ये देखो गाड़ी की चाबी, और हमारे पास एक दिन की छुट्टी पड़ी है। अभी आना को चंडीगढ़ की सैर करवाने लाएगा। और फिर सोच लो, मेरे प्रोजेक्ट के कुछ पेजेस अभी भी खाली हैं। गाइस, तुम लोग जाओ चंडीगढ़, मैं तो सिमरन के साथ जाऊंगी। चलो। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अनुसार रूरल टूरिज्म का एक ऐसा हिस्सा है जिसमें आप विलेज की जिंदगी, वहाँ के कल्चर और वहाँ के लाइफस्टाइल को एक एडवेंचर की तरह ले सके और वहाँ के लोकल लोगों के साथ सोशली और इकोनॉमिकली कनेक्ट कर सके। आपको ये जानकर खुशी होगी कि भारत में हर साल 1,50,00,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं, जिसमें से लगभग 26 लाख टूरिस्ट सिर्फ इंडिया के विलेजेस का टूर करने आते हैं। हमारे इंडिया में करीब 70 लाख से भी ज़्यादा गांव है। जब रूरल टूरिज्म की बात आती है तो विदेशी टूरिस्ट की फर्स्ट प्रेफरेंस इंडिया ही है। रूरल टूरिज्म लोकली एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, जिससे गांव के लोगों की इनकम बढ़ती है। इससे गांव और शहर के बीच में कल्चरल एक्सचेंजेस होते हैं। इससे गांव के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है और वहां के कारीगरों की कला देश विदेश तक पहुंचती है। रूरल टूरिज्म में फार्म टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म भी शामिल है। ये शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में से टूरिस्ट को एक पीसफुल जगह में समय बिताने का मौका देती है, पर इसमें बहुत सी चुनौतियां हैं, जैसे कि लैंग्वेज गैप, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विजिटर मैनेजमेंट इत्यादि। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से और शहर और गांव की कनेक्टिविटी इंप्रूव करने से रूरल इंडिया को प्रमोट किया जा सकता है। टूरिस्ट के लिए एक स्पेशल पैकेज बनाया जा सकता है जिसमें हम रूरल इंडिया की विरासत और संस्कृति दिखा सकते हैं टू मेक इट अ मोर इंसाइटफुल एज वेल एज अ फन एक्टिविटी टू डू। गांधी जी said that India is not Bombay and Calcutta. India lives in her 700,000 villages. इसका मतलब ये है कि विलेजेस का विकास होने से इंडिया खुद ब खुद विकास की सीढ़ी चढ़ेगा।